only to the minute hand. So that's why I'm telling how much distance or how much travel the minute hand has done. It has traveled quarter past 5. ठीक है, कितना minute hand ने कितना journey किया है? So it has done quarter past 5. While the last one is where I'm giving importance to the R hand. यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि आर हैंड ने कितना जर्नी किया. आर हैंड ने किया 5 घंटे और 15 मिनट. कब से? 12 बजे से. ठीक है. सो आई एम गिविंग दैट इंपॉर्टेंस टू द आर हैंड. सो फ्रॉम हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि क्लॉक्स में वी टॉक अबाउट ओनली 2 हैंड्स, द आर हैंड एंड द मिनट हैंड. अब किसका किस पे डिपेंडेंसी होता है? रिमेंबर द आर हैंड moves only when minute hand moves. अगर मैं आर हैंड और मिनट हैंड को ही रखता हूं हाथ में, सेकंड्स को नहीं लिया, तो आर हैंड तभी चलेगा जब मिनट हैंड चलेगा. उल्टा नहीं होता है. मिनट हैंड नहीं चलता है जब आर हैंड चलता है. आर हैंड तभी मूव करता है जब मिनट हैंड मूव करता है. अगर मिनट हैंड मूव करना बंद कर गया तो आर हैंड मूव नहीं करेगा. यहां तक क्लियर है सबको? A quick thumbs up in your against your name if you are clear till here, all of you. All right, थोड़ा जल्दी करते रहना ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको समझ में आ गया and I can proceed faster. ठीक है. All right, तो अब आर हैंड और मिनट हैंड का मूवमेंट्स देखते हैं. एक क्लॉक टिपिकली एक सर्कल होता है ना, और इस सर्कल में होते हैं 12 पॉइंट्स. ठीक है. अब अगर 12 पॉइंट्स को एक हैंड को कवर करना है, 12, 6, 3 और 9. So if the hands have to cover this 12, markings, it means that the hands will cover an entire 360 degrees. ठीक है. The hands will cover entire 360 degrees, क्योंकि 12 मार्किंग मतलब एक पूरा सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्रीज. अब ये 360 डिग्रीज जो कवर करता है, एक मिनट हैंड कवर करेगा 60 मिनट्स में. राइट. in 60 minutes a 1 minute hand will make 1 full circle. यानी कि हर एक मिनट में एक मिनट हैंड बनाएगा 6 डिग्री. जब हम बोलते हैं कि हर एक मिनट में एक मिनट हैंड 6 डिग्री बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? क्योंकि एंगल बनाने के लिए 2 लाइन होना जरूरी है. राइट. एंगल सिर्फ एक लाइन से नहीं आता है. तो एंगल के लिए 2 लाइन होना जरूरी है. तो ये अगर एक मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो किसके साथ बना रहा है? तो 2 लाइनें होंगी, एक प्रीवियस मिनट और एक होगा करंट मिनट. ठीक है. तो अगर मैं ये बोलूं कि टाइम है 1:16, ठीक है, 1:06 PM, और टाइम है, अब टाइम मैंने जब देखा तो टाइम हो गया अभी 1:07 PM. सो 1:06 PM से लेके 1:07 PM तक कितना टाइम हुआ? 1 मिनट. 1 मिनट का मतलब हो गया है कि क्लॉक जो है वो सिर्फ 1:06 से लेके 1:07 तक 6 डिग्रीज मूव हुआ है. मानो याद रखना कि 6 से 7 लेने के लिए. ठीक है. 6 से 7 तक 6 डिग्रीज. उसी तरह से अगर मैंने देखा कि 05 से है तो 05 से 06 जाने के लिए एक और 6 डिग्रीज आ गया. 04 होता तो 04 से 05 आने के लिए एक और 6 डिग्रीज आ गया. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग. तो हर एक मिनट मूव करते वक्त ये जो मिनट हैंड होता है ये बनाता जाएगा 6 डिग्रीज प्रीवियस टाइम के साथ. ठीक है, प्रीवियस टाइम के साथ. अब लेते हैं आर हैंड. आर हैंड को एक सर्कल बनाने के लिए, यानी कि 360 डिग्रीज बनाने के लिए चाहिए पूरा 12 घंटे, है ना, क्योंकि 12 से 12 जाना पड़ता है उसको. 12 से 12 जाना मतलब 12 घंटे हो गया. तो 12 घंटे में 360 डिग्रीज हो गया. राइट. सो इन 12 आवर्स इफ इट इज 360 डिग्री, एवरी आवर इट विल मेक 360 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 30 डिग्रीज.
लेकिन हम ये भी जानते हैं, वी नो दिस दैट द आवर हैंड का मूवमेंट जो होता है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मिनट हैंड. मीन्स in 1 hour, if it is making 30 degrees, in 60 minutes, the hour hand is making 30 degrees. Yeah, in 1 minute, the hour hand is making half a degree. ठीक है. अब बैक, 1 मिनट में हाफ ए डिग्री किसके साथ बना रहा है वो? प्रीवियस टाइम के साथ, प्रीवियस मिनट के साथ. जैसे हमारा मिनट हैंड मूव किया, उसी तरह से आवर हैंड भी मूव करता रहेगा. ठीक है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं अभी. ओके, ऑल ऑफ यू, आई होप यू गाइस हैव रिटन दिस डाउन. ये लिखना, ये जानना जरूरी है. अगर ये आता है तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे क्लॉक्स के. जस्ट 1 सेकंड सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? सर, आई एम राइटिंग. यू कैन स्टॉप द स्क्रीन फॉर 1 मिनट. हाँ, तो स्क्रीन दिख रहा है आपको, 1 मिनट के लिए रोका है मैंने. If you guys have written down, can you just quickly give me a thumbs up? यस सर. All right. Aska, Adira, Aditya, Ankita. Okay. ठीक है, डन है. So now let's understand ये होता क्या है, मतलब क्या हो क्या रहा है, what's happening here. ठीक है. तो मैं I will take two different timelines. Okay, let's say the timeline, what is the correct, अभी टाइम क्या है? 5:25. So let's say the time is 5:25. And next time I will see a time, let's say 5:30 या 5:29. I'll take this as a first example. 5:25 से 5:29, right? अब या 5:25 नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, 5 o'clock लेते हैं. 5 o'clock से शुरू करते हैं. ठीक है. So when I say 5 o'clock to 5:29, I should understand that when I started, my clock was showing a time which is 5. ठीक है. When I started, my clock was showing a time which is 5. And now I'm saying that the clock is showing a time which is 5:29. तो 29 मतलब ऑलमोस्ट 30 के पास हो गया, और ये हो गया 5. So if you see, जो मिनट हैंड है, द मिनट हैंड व्हाट यू सी हियर, 5 o'clock को मिनट हैंड 00 पे था, यानी कि एग्जैक्ट 12 मतलब 00 होता है मिनट हैंड के हिसाब से. एंड 5:29 द मिनट हैंड वाज एग्जैक्टली एट 29. So if I look at the minute hand has moved 29 minutes. ठीक है. I know that the minute hand moves 6 degrees every minute. So 29 minutes का मतलब हो गया 174 degrees. 174 degrees मतलब क्या है? मतलब अगर मैं एक, if I draw one virtual line, ठीक है, एक imaginary line draw करूं which passes from 12 passes through 6. अगर imaginary line draw करूं और इस लाइन से ये imaginary line का एंगल, ओके, in the imaginary line if I look at the angle here, तो ये जो मिनट हैंड के साथ जो एंगल बन रहा है, द मिनट हैंड एंगल is going to be 174 degrees. I hope all of you are clear. ठीक है. बिकॉज मिनट हैंड तो यहीं से शुरू होता है ना, 12 से शुरू होता है, वापस आके 12 में रुक जाता है. 12 से शुरू होता है एंड विल कम बैक टू 12 एंड रीसेट्स इटसेल्फ, तो मतलब वापस 0 हो जाता है. सो द मिनट हैंड ट्रैवल has been
174 degrees. I hope all of you are clear to you. Now let's see the R hand. Okay. The R hand has not moved 29 minutes. क्यों? क्योंकि R hand reset तब होता है when R hand touches 12. ठीक है? When R hand touches 12, that's when the R hand resets itself. यहां से शुरू हो गया, अब आया है from here when R hand moved, it moved for 5 till 5 p.m. Correct, Aditya? So till 5 p.m. तो 5 p.m. का मतलब है 5 hours. और जो जो बोल रहा है 14.5 डिग्रीज वो गलत बोल रहा है, प्लीज सुन लो. ठीक है. आर हैंड शुरू हुआ 12 से. 5:29 PM का मतलब क्या होता है कि आर हैंड चला 5 घंटे और इट ऑल्सो मूव्ड 29 मिनट्स, है ना. तभी तो वो 12 से 5:29 पहुंचेगा, वरना कैसे पहुंचेगा 5:29. 5:29 पहुंचने के लिए आर हैंड को, आई एम रिपीटिंग, आर हैंड को ये 12 बजे से यहां पहुंचने के लिए, यानी कि 5 बजे पहुंचने के लिए उसको 5 घंटे लगते हैं. ओके. और 5 बजे पहुंचने के बाद ये 5:29 तक पहुंचने के लिए उसको और 29 मिनट्स लगते हैं. तो मतलब आर हैंड चला पूरे 5 घंटे और 29 मिनट्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? Yes, sir. राइट. Yes. हाँ, तो आर हैंड सिर्फ 29 मिनट्स नहीं चला है, आर हैंड पहले 5 घंटे चला है, क्योंकि वो 12 से शुरू होता है. हमारा काउंटिंग हमेशा 12 से शुरू होगा, क्योंकि 12 हम 12 को रीसेट करते हैं, क्योंकि 12 से 12 में सर्कल बनता है, राइट. तो इसीलिए 12 को रीसेट करते हैं. तो अगर आर हैंड देखोगे वो शुरू होता है 12 से. 5 o'clock बोलते ही द आर हैंड हैज गॉन फ्रॉम 12 to 5, विच मींस इट हैज मूव्ड 5 hours. ठीक है. लेकिन 5 o'clock ने होने के बाद when the time is 5:29, the R hand has further moved 29 minutes. तो R hand चला 5 hours and 29 minutes. अब देखते हैं 5 hours and 29 minutes. R hand चलता है 30 degrees every hour. और फिर R hand चलता है half a degree every minute. तो 5 hour and 29 minutes का मतलब हो गया कि R hand चला 150 degrees यहाँ पे, और यहाँ पे चला 14.5. सो कुल मिला के R hand चला 164.5 डिग्रीज. ओके. तो अगर मैं R hand का जर्नी देखूं तो वो जर्नी सिर्फ यहां से लेके यहां तक है ना, क्योंकि R hand यहाँ पे है. और ये जो जर्नी की बात हो रही है, दिस जर्नीज एंगल इज 164.5 डिग्रीज. तो और लेकिन हमें चाहिए एंगल बिटवीन द टू हैंड्स. एंगल बिटवीन द टू हैंड्स मतलब 174 से लेके 164.5 डिग्रीज का अंतर, डिफरेंस, एंड दैट वुड बी 9.5 degrees. So if the time is 5:29, the angle is 9.5 degrees. I hope now all of you are clear with the movement of our hand and the movement of minute hand. ठीक है. क्लॉक्स में कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. अगर आप ये जान जाओ कि मिनट हैंड मूव होता है 6 डिग्रीज, आर हैंड मूव होता है हाफ ए डिग्री हर मिनट पे, और 30 डिग्रीज हर घंटे. अगर आपको ये जानकारी है तो यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फॉर्मूले. ठीक है. वैसे भी क्लॉक्स भी फॉर्मूले के साथ भी चल सकता है, लेकिन नहीं चाहिए फॉर्मूले भाई. क्यों चाहिए फॉर्मूले तुम्हें? चलो ठीक है. कैन यू ऑल, इफ आई, अब मैं देता हूं एक टाइम, है ना. आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी द एंगल. टाइम है 3:45. अब ये बताओ कि पीएम एएम से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है. 3:45 क्लॉक में 3:45 दिखाएगा, राइट. सो 3:45 है टाइम. कैन यू टेल मी द एंगल बिटवीन टू हैंड्स? एंड नो नीड टू ड्रॉ ए क्लॉक. प्लीज डू नॉट ड्रॉ क्लॉक्स. ओके. मैं तो ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए, तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है.
So what we will do, we will first find the angle made by the, कोई भी ले सकते हो, आर हैंड मिनट हैंड कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आप आर बैंड भी ले सकते हो, मिनट हैंड भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि पहला यही लेना है। सो हम लेते हैं पहले आर हैंड को। आर हैंड कितना चला है आर हैंड? 3 घंटे और 45 मिनट्स, है ना। 3 आवर्स मतलब 3 × 30, 45 मिनट्स मतलब हाफ इंटू 45। 3 आवर्स 3 × 30 इज 90, हाफ इंटू 45 इज 22.5। ये हो गया 112.5। So the angle that we are talking about is 112.5 degrees for the R hand. Okay. अब लेते हैं next is what? The minute hand. So let's take the minute hand. The minute hand has gone all the way from here and move till here. So now if I look at the minute hand has moved only 45 minutes. It doesn't, for minute hand को फर्क नहीं पड़ता 3 घंटे हो गए कि 2 घंटे हो गए, 45 मिनट ही मूव किया उसने 12 से। 45 मिनट्स मतलब 45 इंटू 6 डिग्रीज। 45 इंटू 6 कितना होता है? 270 डिग्रीज। तो 270 और 270 और 112 का डिफरेंस क्या हुआ? 0.5, ये हो गया 57 और ये हो गया 1। सो इट इज 157.5 डिग्रीज। ये हो गया डिफरेंस। सो दैट्स द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स। ओके, Yes, sir. राइट। आर्या, बी केयरफुल, सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। Okay, so this is your angle calculation when we come to clocks. All right. Okay. Chalo. Now let's come to the next question. Okay, so before that, let me give one more question to you. Your time is 7:20. Can you tell me the angle? All of you, please tell me the angle in your answer in the chat window without any mistake. I do not want mistakes. 7:20 is the time. 100. So 7:20 means the hour hand, the minute hand. Minute hand move किया 20 minutes. 20 into 6, 120. And our hand has gone 7 hours and 20 minutes. That is 210 plus 10, 220. Difference 100. Right. All of you got that 100, Priya? Check your calculation error. Okay. So 100. So now you have to understand that एंगल ढूंढते वक्त कभी कभी आर हैंड मिनट हैंड के पीछे होगा। जैसे हमारा 345 था, यहाँ पे आर हैंड जो है वो मिनट हैंड से पीछे है, इट इज बिहाइंड द मिनट। एंड समटाइम्स द आर हैंड इज अहेड ऑफ द मिनट हैंड, है ना। कोई ऐसा टाइमिंग हो सकता है जब आर हैंड मिनट हैंड से आगे। अब तो यहां से हम निकलते हैं एक और ऑब्जर्वेशन के लिए। नाउ लेट मी ड्रॉ ए टाइम। एक टाइम ले लेता हूं मैं, आर्बिट्री टाइम ले रहा हूं, ठीक है। ड्राइंग जैसे होगा वैसे होगा। 3, अरे मैंने लिया टाइम 3:10 के बाजू में।
I want a yes or no from you guys saying that do you think कि ये जो एंगल यहां पर बनेगा 310 या 311 पे, ये जो एंगल बनेगा, क्या वो एंगल ऐसा कभी आ सकता है कि वो एंगल 3 बजे को ही फिर से कहीं और बनेगा? आई एम रिपीटिंग, ले मान लो ये x डिग्री है, राइट, देयर इज अ टाइम 310. डू यू थिंक समवेयर एट 322 या 323 को ये x डिग्रीज विल हैपन अगेन? Yes, sir. Yes, sir. है ना? No, sir. होगा. एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन होगा. इट इज लाइक दिस गाइस. Assume that you are walking in a park and there is a person who's behind you. ठीक है? He is also walking. And after some times, he is ahead of you. Do you think there will be a time when the number of steps that he is behind you is same as the number of steps he is ahead of you? अगर वो 3 स्टेप तुम्हारे पीछे था, थोड़ी देर के बाद वो 3 स्टेप तुम्हारे आगे है, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा एक वक्त आएगा? बिल्कुल आएगा, राइट? क्योंकि वो तुमसे क्रॉस करते हुए जा रहा है, तुम्हें क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस वो तुम्हारे पीछे था उतना ही डिस्टेंस वो तुम्हारे आगे आएगा. और ये एक ऐसा समय या ऐसा टाइम जरूर आएगा, अगर तुम नहीं रुके, वो नहीं रुका तो. क्लॉक्स में भी यही है. इन क्लॉक्स ऑल्सो इट इज द सेम. देयर विल बी एन एंगल. ठीक है? जैसे मान लो 3:30. Everybody knows that 3:30 is a right angle triangle. I mean, sorry, 3 o'clock is a right angle triangle. जानते हो आपकी 3 o'clock right angle है. आपको लगता है कि 3:35 के आसपास एक और राइट एंगल आएगा हमको? Yes, बिल्कुल sir. आएगा, राइट? You will definitely get another right angle. All right? So you will definitely end up getting two angles which are same when the time is different. ठीक है? Someone wanted me to explain the previous one. Who wanted? Shrishti. Shrishti, the time is 7:20. Quickly taking a break from the current explanation to the previous question. Time is 7:20, Shrishti. So if I look at the hour hand has moved 7 hours. Each hour 30 degrees. So 7 into 30. And 20 minutes. Each minute, half a degree. So half into 20, which is 220 degrees. Similarly, if you look at the minute hand has moved only 20 minutes because the time is 7:20. 20 minutes mein minute hand would move 20 into 6 degrees, which is 120 degrees. So if you want to know the difference in the two hands, it is the difference between 220 and 120, which is 100 degree. Are you clear with this, Shrishti? A quick yes in the chat window, in case you are. Achha, theek hai, done. So let's go on. Let's go back here. So now, certain things that I'm going to tell you, I want you guys to write down. Okay? I want you to write down, and I'm going to write down the same thing here that you see on the screen. Point number 1. When a time is given, there will exist only one angle between the two hands of the clock. मतलब अगर मैंने आपको एक टाइम दिया है 3:30 या 3:10 या 2:15, कोई भी टाइम ले लो, उस टाइम में आपको एक ही एंगल मिलेगा. रिमेंबर, वी आर नॉट लुकिंग इनटू रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल आप जानते हो क्या होता है, राइट? द रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, अगर ये डायग्राम मैं ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये बड़ा वाला एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, राइट? हम रिफ्लेक्स एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे वाले एंगल की बात कर रहे हैं. So when a time is given, there will exist only one angle between two hands. अगर मैंने आपको टाइम दिया है, आपको एक ही एंगल मिलेगा
एक एंगल से ज्यादा आपको एंगल नहीं मिलेगा जब तक आप रिफ्लेक्स एंगल नहीं निकालोगे। सेकंड, लेकिन इफ एन एंगल इज गिवन विद इन एन आवर, विद इन एन आवर का मतलब क्या होता है? 3 और 4 घंटे, 4 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में, तो 1 घंटे के दायरे में, राइट? सो इफ एन एंगल इज गिवन विद इन एन आवर, दैट कैन, याद रखिए कैन, 99% ऑफ द टाइम, ये मैं तुम्हारा इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। 99% आपको ये होगा, 1% है चांस है जहां पे नहीं होगा। इफ एन एंगल इज गिवन विद इन एन आवर, देयर कैन बी मोर देन वन टाइम विद इन दैट आवर। जैसे अगर मैंने आपको बोला, इफ आई टेल यू गाइस कि 90 डिग्रीज है 3 to 4 के बीच में, ठीक है, तो आपको दो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, एक 3 बजे और एक 3:30 के आसपास। आसपास बोल, 30 नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो आपको 1 घंटे के अंदर ही दो टाइमिंग मिलेगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। ओनली 180 डिग्रीज and 0 degrees happen zero or one time within an hour। 180 डिग्रीज और 0 डिग्रीज ही एक ऐसा टाइम है जो 1 घंटे के अंदर हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है? कभी कभी नहीं होता है 1 घंटे के अंदर, जैसे कि 11 बजे से लेके, मैं बताता हूँ, 11 बजे से लेके 12 बजे, अगर आप ये टाइमलाइन को इमेजिन करोगे अपने दिमाग में, तो 11 o'clock से लेके 12 o'clock तक आपको 0 डिग्रीज कभी नहीं मिलता। 0 डिग्रीज मिलता है आपको 12 o'clock, जो वो उस घंटे का टाइम नहीं है, वो 11 से 12 के बीच का टाइम नहीं है, वो अगले घंटे का टाइम आ गया, इट इज द नेक्स्ट आवर, ठीक है? सो 11 to 12 के बीच में आपको 0 डिग्रीज कभी नहीं मिलेगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर, राइट? तो ऐसे ही 180 डिग्रीज एंड 0 डिग्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार या कभी कभी नहीं होता है 1 घंटे के अंदर। आई होप यू गाइज आर क्लियर। सो फर्दर इंफॉर्मेशन इज दिस, इन ए डे 0 and 180 degrees happen 22 times। एक पूरे दिन में आपको 0 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज एक क्लॉक में 22 बार मिलता है, ठीक है? यानी कि आधे दिन में आपको सिर्फ 11 बार मिलेगा, इसका आधा। उसी तरह से अदर एंगल्स, अदर एंगल्स का मतलब है अपार्ट फ्रॉम 0 and 180, ठीक है? अदर एंगल्स हैपन 44 times इन ए डे, डबल हो जाता है वो, ठीक है? तो 44 टाइम्स आपको मिलेगा बाकी सारे एंगल 0 और 180 को छोड़ के पूरे दिन में, यानी कि आधे दिन में आपको मिलेगा 22 टाइम्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा वाला, 2 hands of a clock coincide। coincide का मतलब क्या होता है? 0 डिग्रीज बनना। एवरी, ये मैं लिखूंगा 65 5/11 मिनट्स। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन के वैल्यू में every time 2 hands of a clock coincide,
Okay, two hands of a clock coincide every 65 5/11 minutes. Next point. और ये अभी इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इफ two hands of a clock take more than 65 5/11 minutes, यानी कि 65 5/11 मिनट से ज्यादा टाइम लेता है टू कोइंसाइड, ठीक है, मतलब मिलने के लिए, देन दे आर known to be running slow, यानी कि वो स्लो चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम लिया, which also means losing time. ठीक है, अगर हम जानते हैं कि टू हैंड्स को कोइंसाइड होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 65 5/11 मिनट्स चाहिए। अगर 65 5/11 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो यानी कि मेरा क्लॉक जो है वो स्लो चल रहा है, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि वो पूरे दिन में टाइम लूज करेगा। इफ टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टेक लेस देन 65 5/11 minutes to coincide, then they are known to be running fast. Yeah, we also say gaining time. Put a thumbs up if you have understood and written all 8 points. अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत है समझने में, प्लीज आस्क मी एंड आई वांट इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको यहाँ पे क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम पास कहीं और कर सकते हैं। If you have understood and written, please give a thumbs up. I don't want to waste anyone's time. And if you have a doubt, please ask. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, in the sixth point, you have said that two hands of a clock will coincide after every this minute. So, can you हाँ please elaborate this one with the help of a diagram or any rough sketch? हाँ, How it let me takes place? ठीक समझाता हूँ मैं। अब so now let's assume, tell me a time when you feel that the hands of a clock are together. 3 3 or 4 4. इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? 12 o'clock हो गया ना। Yes, sir. हाँ, so 12 o'clock the two hands are coinciding. So when do you think they will coincide again? Do you think they will coincide कि नहीं होगा? Coincide होगा, है ना? तो 12 o'clock के बाद 12 o'clock के बाद when the hands start moving, 1 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। So when will they coincide? तो ये जो टाइम होगा ना जहां पे when where they are going to coincide, let's say this is the time where they are coinciding, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। So let's say this is the time when they are coinciding. The difference between this time and this time is actually 65 5/11 minutes. Did you understand this? Yes, sir. And this is now at 1. What do you think? When will they coincide again? कौन से घंटे में? Which hour they will coincide again? 1 o'clock 1 हो गया. Now which is the next hour they'll coincide again?
around 2 o'clock, है ना? When the R hand is in 2. So the R hand जब 2 पे होगा, the minute hand also will be at the same line. This angle or this coinciding will happen when again from the previous time it has taken 65 by 11 minutes. Are we clear? Yes, sir. So every time it will take 65 by 11 minutes to coincide. Coincide matlab जुड़ना. Okay? Yes, sir. All right. Tanisha, what doubt you have in the second question? Second question, the Tanisha, the statement is that let's say I'm telling you, hey, the time is between 3 to 4. And angle between the two hands is 30 degrees. Can you tell me the exact time? Now, what I mean to say here is that because you have been given an angle, you will end up having two timings. Between 3 to 4 itself, Tanisha, you will have two timings. Did you understand this second point now? Yes, sir. So any angle which is not 0 and any angle which is not 180 degrees, this will happen two times within 1 hour, within an hour. That hour can be between 3 and 4, the hour can be between 4 and 5, the hour can be between 5 and 6. Kabhi bhi ho sakta hai. Okay? So let me make you understand the entire process by solving question. So this is the question. At what time between 3 and 4 will the two hands of a clock be together? Now we are asking together. Together means the angle should be 0 degrees. Now what is the time? The time is between 3 and 4. Means my R hand has already moved 3 hours. तो मैं काम करता हूं. Let me do a thing. Screen freeze है क्या? अच्छा, एक मिनट. Yes, sir. Okay. Let me share. Now you guys are able to hear, see? Yes, sir. Yeah. So it says at what time between 3 and 4 will the two hands of a clock be together? Now I do not know the time, guys. So I know only one thing, that the R hand is between 3 and 4. मतलब 3 बज गए हैं लेकिन 4 नहीं बजे. ठीक है? Between 3 and 4 का मतलब क्या होता है? 3 बज गए लेकिन 4 नहीं बजे. It has already struck 3, but it is yet to strike 4. So I will assume the time to be 3 m. जैसे हम बोलते हैं ना 3 o'clock या 3:05 लिखते हैं या 3:20 लिखते हैं, उसी तरह से मैंने लिखा 3 m, where m is the minutes. ठीक है? अब लेते हैं R hand और minute hand. m अगर minutes है, if m is minutes, then it means that Gargi, it's unfortunate I cannot summarize now, Gargi. Okay, it's already 6. I have taken an hour class. I can't summarize now. I'm so sorry. You may have to look at the recordings. All right, and try listening to the class. I will keep repeating whatever I say. Okay, or Okay, keep sir. elaborating whatever I say. So first is, because the time is between 3 and 4, I will consider the time to be 3m. 3m means that it is certain minutes, m minutes past 3. Now that m is what I have to find. Okay, and then click the answer. Now, if I take the minute hand, we all know that a minute hand makes 6 degrees every minute. Okay, a minute hand makes 6 degrees every minute. Now, because the time is m minutes past 3, the minute hand will only move for those m minutes and thus make 6 into m, that is 6m degrees. I hope all of you are clear, including Gargi. 6m is the angle made by the minute hand for m minutes, where each minute the minute hand moves 6 degrees.
What did I tell about the hour hand? When we talk about the hour hand, we have to consider the travel done by the hour hand both in terms of the hours and in terms of the minutes. So means the hour hand has traveled 3 hours and m minutes. An hour hand makes 30 degrees every hour, and it also makes half a degree every minute. So if I have to look at the hour hand, it would have made 90 degrees plus half plus m by 2 degrees. This is the angle made by the hour hand. And 6m degrees is the angle made by the minute hand. Clear, guys? Now, when it comes to angle between the hands, we saw that, I'll again go back to that screen. In this screen, you saw this, that when we talk about angle made between the hands, you can have a time where the hour hand is behind the minute hand, like the time that you see on the screen right now with double take, where the hour hand has traveled less, but the minute hand has traveled more. So the hour hand is behind the minute hand. But you can also have a time like the one that I have now shown here with a double tick, where the minute hand, sorry. Yeah, you can also have a time where it's shown now with the double tick, where the hour hand is ahead of the minute, right? The hour hand has traveled more and the minute hand has traveled less. I hope all of you are clear. So when it comes to these kinds of questions, the first thing I have to do is I do not know whether the hour hand is ahead or the minute hand is ahead. So I will use two cases. Okay? First case is that the hour hand is ahead of the minute hand. So I will take the difference of the angle made by the hour hand and the angle made by the minute hand and equate it to 0. Why 0? Because the question is talking about being together. Being together means the angle between the two hands is 0. If the angle was given to me, I would have taken that angle. This is one case. Fortunately, both the cases are same, but I am still writing it so that when the angle is still understandable for us. What would be the second case? Second case is where the minute hand has traveled more than the hour hand. And that's the difference that the angle makes, where in this case it's still 0. So 0 के कारण, because you have a 0, ये जो cases बनते हैं वो कुछ अलग नहीं बनते, वो same बनते हैं, है ना? अगर 0 नहीं होता, कुछ और angle होता, तो ये अलग अलग केस बनते. तो हम बोलेंगे कि 6m is equal to 90 plus m by 2. m by 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 6m minus m by 2 divided is equal to 90. In clocks, now this is a rule that all of you to remember. In clocks, ये 6m minus m by 2 है ना, इसको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखो. Remember that 6m minus m by 2 is nothing but 11m by 2. Do not keep solving this every time. जैसे ही देखा 6m है और m by 2 है, 6m minus m by 2 हो गया, 11m by 2 हो गया. ठीक है, डायरेक्टली लिख दो. That is equal to 90. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया m is equal to 180 by 11. 180 by 11 का क्या वैल्यू होता है मिक्स फ्रैक्शन में? 11 1s are 11, 7 carry 70, 11 6 are 66, 4 remainder. So 16 4 by 11 हो गया my minutes, मतलब मेरा मिक्स फ्रैक्शन है, right? So 16 4 by 11 minutes होगा, which is my first option. I hope all of you are clear with this calculation. So all you ended up doing is we ended up taking a different timing जहाँ पे m का वैल्यू नहीं पता and we ended up solving it. Okay? Quickly, let's go here. Now here, at what time between 4 and 5, the minute hand and the hour hand of a clock will be perpendicular to each other. Perpendicular का मतलब क्या होता है कि एंगल हो गया 90 degrees. Again time मांगा है. I do not know the time, लेकिन मैं जानता हूं कि time होगा certain minutes past 4. क्योंकि between 4 and 5 का मतलब क्या होता है कि it is already 4 but not yet 5. So this is the time.
अगेन 2 केसेस आएंगे। चलो पहले आर हैंड एंड मिनट हैंड का मूवमेंट्स देखते हैं। दी आर हैंड कितना मूव किया आर हैंड? 4 hours which is 34 into 30 degrees and m minutes which is half into m, and minute hand कितना मूव किया? m minutes which is m into 6, क्योंकि 6 degrees every minute, तो 6m हो गया। So what are the two cases guys? Two cases is कि 120 plus m by 2 minus 6m, इसका डिफरेंस होना चाहिए 90, या 6m माइनस 120 प्लस m बाई 2, रिमेंबर इनको ब्रैकेट में डालो वरना वो माइनस प्लस का गड़बड़ आ जाता है, इज 90। क्लियर गाइस दीज टू केसेस? तो एक एक केस करके सॉल्व करते हैं। 120 प्लस m बाई 2 माइनस 6m हो गया 120 माइनस 11m बाई 2 इक्वल टू 90, या ये करूंगा 11m बाई 2 इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू 60 बाई 11, 60 बाई 11 हो गया। स्नेहा कैलेंडर की क्लास होगी कल, आज सिर्फ क्लॉक्स की क्लास है। m इज इक्वल टू 60 बाई 11, 60 बाई 11 हो गया 5, 5 बाई 11। तो ये तो एक ऑप्शन आ गया मेरे को, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन मेरे को दूसरा ऑप्शन मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ सीधा टिक करके जा नहीं सकता। रिमेंबर आई कैन नॉट टिक दिस डायरेक्टली, ठीक है? सो आई हैव टू डू द अदर केस ऑल्सो। 6m माइनस 120 प्लस m बाई 2 हो गया अगेन 11m बाई 2 माइनस 120 इक्वल टू 90, 11m by 2, 120 plus 90, 210, 210 को m कितना हो गया? 420 by 11, 420 by 11 का मतलब हो गया 30 कुछ, राइट? 38 2 by 11 है ना? 33 98 नहीं, 38 2 by 11 नहीं आएगा, 2 by 11 आएगा क्या? 11 3 सा 33, 33 मतलब 90, हाँ 2 by 11 ही तो आएगा, करेक्ट। सो 38 2 by 11 वो भी आंसर है यहाँ पे, तो ए एंड बी दोनों है, तो मेरा आंसर ऑप्शन हो गया डी, बोथ ए एंड बी। Did you understand why these two cases are required? Because remember this is where the point comes. ये point लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे, क्या point था? Point number 2. If an angle is given within an hour, there can be more than one time within that hour. Now you have understood that point. What does it mean? Angle was given, an hour was given, but I got two different timing. One timing was 38 2 by 11 minutes past 4. Other timing was 5 5 by 11 minutes past 4. All right, guys. Okay. I will leave third one for assignment. I will be sharing this sheet again to you guys. This also assignment हो गया। अच्छा, ये देखते हैं फिफ्थ वन। आई विल डू इट फॉर यू। फिफ्थ का सिमिलर वाला असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है? फिफ्थ, द मिनट हैंड ऑफ ए फॉल्टी क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 66 मिनट्स। कौन बताएगा कि क्या मैं लूज कर रहा हूं कि गेन कर रहा हूं? Am I losing time or gaining? lose Right, I'm losing time क्योंकि I am taking more than required, ज्यादा ले रहा हूं ना। I know that coincide आता है, coinciding होता है every 65 5 by 11 minutes. So two hands of a clock, you may have to you may have to use the recording Gargi to understand this. Two hands of a clock coincides every 65 5 by 11 minutes, but my clock is coinciding 66 minutes, so it is losing time. How much is it losing? So I have to take out the time that my clock is taking, subtract the time that real clock always takes, which means subtract 65 5 by 11. The difference between 66 and 65 5 by 11, which is 6 by 11, is the time my clock is losing. ठीक है, ये तो बढ़िया है कि my clock is losing 6 by 11 minutes. लेकिन ये 6 by 11 minutes कब लूज कर रहा है? 1 घंटे में लूज करता है, 2 घंटे में लूज करता है, 1 दिन में लूज करता है, 1 मिनट में लूज करता है? When does
when does this clock lose the time? That's very important for us. Okay. The fact that the coinciding happens every 65 5 by 11 minutes, while your clock is coinciding every 66 minutes, right? Every 66 minutes your clock is coinciding. Matlab, you are losing 6 by 11 minutes every 66 minutes. You know why you're losing every 66 minutes? Because your clock is taking 66 minutes to coincide. And that's the reason why you are losing that time every 66 minutes. You're not losing that time at any other, timeline. You're losing it only at every 66 minutes. A quick yes or no is if you are clear with this, because only if you're clear, then I will proceed. Otherwise, let me know your doubt. A quick, guys, take a minute and tell me whether you're clear or not. Put a thumbs up, whatever you feel as a hashtag. See, remember, so I'll repeat. How do you know that your clock is losing time or gaining time? Or when did you get to know that your clock is losing time and gaining time? You got to know only when this value, the 66 minutes, was given to you. Otherwise, you wouldn't have got to know, right? If I tell you that, hey, my clock is not coinciding, if I make a statement that my clock is not coinciding every 65 5 by 11 minutes, does it make sense? Will you know that whether my clock is gaining time or losing time? You will not. Why? Because you do not know how much time my clock is actually taking. But if I say that my clock is taking 66 minutes, now you know exactly whether my clock is losing time or gaining time. And that's why you're able to calculate how much it is losing. Means you're able to calculate this 611 by 11 minutes because my clock is losing or gaining every 66 minutes. Now, the question is not talking about every 66 minutes. The question is talking about in a day. So the question is that how much will it lose or gain in a day? And a day has how many minutes? I have to take minutes because I'm considering minutes everywhere. So a day will have 24 into 60 minutes. Remember the unitary method where we cross multiply? So if this value is considered as x, cross multiply. So 66 into x is same as 24 into 60 into 6 by 11. Okay, the unitary method. So x becomes, I'm sure you would have studied unitary method when you were in probably 6th grade itself, right? 6 by 11 upon 66. So let's solve this. 6 goes 11 times, right? So 24 into 60, whatever value you get, that's 1440 divided by 11 11s are 121. And you got to write this in a mixed fraction because your answers will always be in a mixed fraction. I purposefully did not give you an answer option here, but that's how it is. But remember one thing, that whenever you're losing time, gaining time question आता है, आपका denominator हमेशा 121 रहेगा. Okay, that's an easy one of the ways of identifying your answer also, in case your answer is having something unique in it. ठीक है? Okay. यहाँ पे करते हैं 6th one मैं assignment के लिए दूंगा, but then tomorrow when we are doing calendars, I will solve this on that tomorrow also. We'll start solving this first and then we will go. Okay. Same with 7, same with 8. I want to do one. Okay. I want to do these two questions, 8 and 10, 9 and 10. This is a very simple one, but people complicate it by using different other methods. If a time in a clock is 7 hours 30 minutes, मान लीजिए, okay, imagine this. Imagine that wherever you're sitting, there is a clock behind you. And the time there is showing as 7:30. Now, also imagine that you are right in front of a mirror. तो आपको मिरर से आपका शक्ल और क्लॉक भी दिख रहा है. तो जब आप क्लॉक को देखोगे मिरर के थ्रू, तो क्या टाइम दिखेगा? इसमें यूजुअली लोग ड्रॉ करने लग जाते हैं. Okay, and that's what I do not want you to do. Don't do anything. बहुत सिंपल है. Write your time. I'm sure you guys would have seen these
the stopwatch. So write your time in terms of hour, minutes and seconds. कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे seconds इस क्वेश्चन में seconds नहीं दिया है, because the question has not given me seconds. I will give the seconds as 00. Had the question said 7 hours, 7:28 and 43. अगर ये दिया जाता, then I would have written it in a different way. I'll tell you that also. But because the seconds is not given to us, I'll write seconds as 00. In place of minutes, I will write 60. Okay? 60 minutes makes 1 hour, right? That's why 60. And in place of hours, I will write only 11. Because my clock has 12 hours. I've already considered 1 hour in the part place of minutes. So I will consider 11 hours. Is this clear to all? अब इस नंबर से क्या नंबर दिया है? 7 hours and 30 minutes, है ना? सेकेंड्स तो कुछ नहीं दिया है, 7 hours and 30 minutes दिया है. So 11:60:00 से 7:30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपके आंसर होंगे. Excuse me, sir. हाँ, Sir, in every question we will take this 1160 and बिल्कुल subtract. बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं दूसरा एग्जांपल भी बता देता हूँ. So यहाँ पे आपने 11:60:00 लिया. You took 11:60:00 only because you did not have seconds in your hand. Now I will explain you this. And once you write 11:60:00, subtract the time given to you. That is the time shown in the mirror. If someone says, hey, 7:30 is the time shown in the mirror, कोई problem नहीं है. 7:30 को subtract करो, जो बचेगा वो real time है. ठीक है? एक वैल्यू इसमें, इन दो वैल्यू, you see there are two values here. One will be mirror value and one will be real value. कोई भी मिरर डाल दो, अगला रियल आएगा. क्लियर है? अब मान लो कि मैं बताता हूं, मैं टाइम दे रहा हूं 7:28:43 seconds. इसका मुझे मिरर वैल्यू चाहिए. तो क्या करूंगा? बिकॉज सेकंड्स दिया है, मैं आर मिनट्स एंड सेकंड्स के बीच में, बिकॉज सेकंड्स दिया है, मैं 60 सेकंड्स यहाँ पे डालता हूँ. 60 सेकंड्स डालते ही आपके हाथ में कितने मिनट्स हो गए? 1 मिनट आ गया. 1 घंटे के लिए कितना मिनट? 1 घंटे के लिए कितना मिनट चाहिए? 60 मिनट्स चाहिए. लेकिन आपने 1 मिनट ऑलरेडी सेकंड्स में डाल दिया, तो आपके हाथ में कितने मिनट्स होने चाहिए यहाँ पे? अभी 59 मिनट्स होने चाहिए. जैसे ये 60 हो गया, 1 मिनट आएगा, मिनट हैंड में ऐड होगा, मिनट हैंड 60 हो गया. मिनट हैंड 60 होते ही वो क्या कन्वर्ट हो गया? 1 आवर पे कन्वर्ट हो गया. वो 1 आवर आके एच में ज्वाइन होगा, तो एच कितना होना चाहिए मेरे पास? 11. समझ में आ रहा है सबको? ये 11 hours 59 minutes and 60 seconds समझ में आ गया? ये सारा Sir, का could you सारा. explain again? See, 11 hours 59 minutes and 60 seconds is equal to how many? It's always equal to 12 hours. Why? 60 seconds makes 1 minute. That 1 minute when gets added to 59 minutes will make 1 hour. That 1 hour when gets added to 11 hours will make 12 hours. Did you understand this? In Yes, our sir. previous example, we did not have seconds. So there was no seconds converting to minutes, and that's why we ended up taking 60 minutes. As soon as we ended up taking 60 minutes, it converts itself to 1 hour, and thus we had 11 hours. Now from this value, I will subtract 7, 28 and 43. So when I subtract 7, 28 and 43, how much do I get? I get 17 seconds यहाँ पे. I get 59 minus 28, which is 31 minutes. And 11 minus 7, 4. So my timing is 4:31:17 in the mirror. Is this clear to all of us? Yes. Very, very simple, very straightforward. All you have to remember is this: 11:60:00 if you do not have seconds, 11:59:60 if you have seconds. बस इतना ही याद रखना. चलो जल्दी से फिर अगर बताओ, हर बंदा, all 40 people or 39 people in this class, tell me the timing answer for this. There is no seconds, so tell me the answer.
श्रेया, subtraction cannot be wrong. अगर आपके subtractions गलत हो गए तो आपके फिर questions ही पूरे आंसर्स गलत होते रहेंगे. Yeah, pretty straightforward and easy, right, guys? So all you have to remember is 1160 or 1159. That's all you guys have to remember. Okay. The rest of the questions I'm going to give as an assignment. Don't worry if you do not get it. Try, but I want you guys to try. Give it a try. Don't give up. Okay. Giving up is the most easiest thing that you can do. So don't do that. Give a try. And if you still come across doubt, let me know. Okay. And you know what? I will just stay here. Do not go. Do not leave the class. Just stay. चैट विंडो कहाँ पे है? चैट विंडो रहा ये, चैट विंडो. ओके, मीटिंग ग्रुप चैट. Okay, I'm sharing the entire file that we just used in the chat window. Okay, Ashwini sir, you are there? Or Gaurav sir, you are there? Anyone's there? All right, so I'm sharing the, just a minute, it is sharing. I'm sharing the file in the chat window. Before you do anything, yeah, it's shared. Click the file, download it, save it before you exit the class. क्योंकि अगर एक बार exit कर लिए, वो फाइल गायब हो जाता है, फिर नहीं मिलेगा, फिर आप ढूंढते रहोगे या पूछते रहोगे. Don't do that. So download the file, save it, and only then exit the class. Okay, guys? I'll meet you tomorrow again, same time, around 5ish, and we will complete calendars then. Also, we will solve certain questions from here. Calendars बहुत छोटा वाला क्लास है, क्योंकि उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कोई फायदा नहीं है उसका, राइट? बाकी दो टाइप के क्वेश्चन आप सीधा सीधा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है. डन. All right, guys, then thank you. Have a great day, great evening. Thank you, sir. And see you all. Thank you, sir. Chalo, bye. So me.